अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे who must have already done their preparation up to a certain extent एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अब स्टडीज स्टार्ट करने वाले हैं. नाउ फ्रेंड्स, विदाउट प्लानिंग एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट. सो बोर्ड एग्जामिनेशंस को टेक केयर करते हुए, पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमें अपना स्टडी प्लान डेवलप करना पड़ेगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट IPMAT इंदौर एग्जामिनेशन, सो वी डोंट हैव दिस लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, बट हेलो फ्रेंड्स, a very warm welcome to all of you on PW. Now friends, today what are we going to do in this session? We are going to discuss one of the most important things that will make your examination a success: the planning. Now friends, without planning everything is incomplete, and especially for the examination, which is probably, I would say that it is going to be one of the most important events of your life, IPMAT examination. We need a proper planning to tackle this examination, right? So all of you must be knowing about the type of competition that you are going to face in this examination. There are thousands of students who will be appearing for this exam, and only handful of the students will be able to secure their final seats in one of the IIMs, one of the best colleges of the country, right? So friends, in order to basically make sure that you ace over this examination, you fetch good marks and hence good percentile or good rank, so that you have a final selection in IIMs, you must have to plan whatever time is remaining for you in a proper way. So here I am for all of you, because we understand the importance of planning, we understand the importance of this examination from the point of view of the career of our students, right? So IPMAT logical reasoning is one of the most important sections in this examination. So I am here will present you the next 5 months plan, a study plan, a proper study plan that you must follow in order to success this examination. So friends, I am Gaurav Gupta and I am one of the mentors with PW, and I've been teaching since last 17-18 years, and I have taught all the students who want to excel in logical reasoning and data interpretation. I can say that both these topics, both these areas are a part of our IPMAT examination, right? So friends, today in this session, I will break this logical reasoning section in different parts and will tell you what strategy, what plan you should follow for the next 5 months, whatever time is remaining for you, in order to make sure that you understand each and every topic, you can solve the questions of each and every topic, right? And you are taking least amount of time to tackle these questions, because time is one of the biggest constraint, one of the biggest enemies that will have to fight against. All right, so now let's talk about what strategy, what plan we should be following for the next 5 months, right? So I'll be discussing, like I said, the topic-wise study plan for this section of logical reasoning. Now, if I talk about IPMAT indoor examination, so we don't have this logical reasoning section, but it is the integral part of, it is the most important part of IPMAT Rohtak examination. सो अगर आप रोहतक का एग्जामिनेशन देखोगे, सो आई एम श्योर दैट आप सबको अभी तक पैटर्न के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा. ओके, सो जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, सो ऐसे स्टूडेंट्स ने अभी तक, like because we have the 12th board examination in front of us, this is one of the most important hurdle, one of the biggest hurdle that will have to cross before IPMAT examination. So हमें board examinations का भी take care करते हुए, because we'll have to secure good percentage in board examinations as well. So board examinations को take care करते हुए, point of view में रखते हुए हमें अपना study plan develop करना पड़ेगा, right? So if I look at IPMAT Rohtak examination, you will get good number of questions, like this is I would say equally important as compared to the other sections of this examination, right? So we'll have to devise एक proper strategy होनी चाहिए इस section को tackle करने के लिए.
एंड अंडरस्टैंड करो कि ये सेक्शन बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है. ओके, राइट. सो हम क्या करते हैं, लाइक व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड दिस एंटायर सेक्शन इन 3 different parts. Okay, so what you can do is you can take care of 1 or 2 parts before your board examination and then start working on the third part after your board examinations. And then once board examinations will be over somewhere in the month of March में हमारे board exams खत्म हो जाएंगे. So immediately after that, एकदम से मार्च में आप लोगों को क्या करना है, यू मस्ट स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ ऑल दोस टॉपिक्स अगेन. ठीक है, राइट. सो अब डिवाइड करते हैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में. अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे who must have already done their preparation up to a certain extent, एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अब स्टडीज स्टार्ट करने वाले हैं, राइट. So I'll be taking care, I'll be discussing the study plan from the point of view of both the type of students, right? Okay, so if I'll first of all look at the different topics that may appear in the reasoning section of IPMAT examination. So let's have a list of each and every topic one by one. ठीक है, एंड देन वंस आई विल बी शोइंग यू द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, तो मैं हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करूंगा फॉर 10 to 15 seconds so that you understand what type of questions you are expecting from these topics. Okay, so the students who are new for this examination, who have not started their preparation for this exam, they will be benefited from this small discussion. Okay, now reasoning section is a section in which any question that involves our IQ, that involves thinking, out of the box thinking maybe, right? So these are the questions that will be asked. So maths की तरह नहीं है, quantitative aptitude की तरह नहीं है कि आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड आंसर आ जाएगा. So आपको सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए, right? So the list starts from clocks and calendars, right? So clocks and calendars पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? So clock में let's say you are given a particular time, जो हमारा एनालॉग क्लॉक होती है जिसमें आवर हैंड मिनट हैंड अलग अलग होते हैं. सो यू विल बी गिवन सम पर्टिकुलर टाइम एंड उस टाइम पे आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में. अब अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूं तो डेफिनेटली रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ते हैं वो अप्लाई हो सकता है, बट देयर आर सम अदर कंसेप्ट्स यूजिंग विच हम टाइम सेव कर सकते हैं. So obviously I'll be teaching you all these things in the classes, right? Now similarly calendars, एक particular date given है, right? So let's say 1st of January 2002 and बताया हुआ है कि 1st of January 2002 पे मंडे था. So आपको फाइंड आउट करना है कि 16th of February let's say 2052 में कौन सा डे होगा, right? So इस टाइप के क्वेश्चंस कैलेंडर्स में मिलेंगे. So this is something about clocks and calendars, right? नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी देयर जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, इट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग. ना कोडिंग डिकोडिंग में आपको लाइक नंबर डिकोडिंग हो सकती है, नंबर कोडिंग हो सकती है, अल्फाबेटिकल कोडिंग हो सकती है, राइट? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग आर देयर and you will get to understand, you will get to know about each and every different type of coding and decoding in the classes that we are going to teach you. Okay, now next is blood relations. Now blood relations, family tree. Okay, so you will be given certain like sentences which will tell you the relationship between one person with the other person using different number of people between them. So direct relations नहीं given होगा, वो घुमा फिरा के questions देंगे and then you will have to tackle these questions, right? Next will be directions, north, south, west, east. So a person started from his house, went in the north direction, took a right turn, then walks for 5 kilometers, took a left turn, and then he stopped. Okay, now you'll have to find out the total distance that he has traveled. You'll have to find out the straight line distance, the minimum possible distance between the initial point and the final point. कौन सी direction को face कर रहा है, किस direction में जा रहा है. So all these type of questions you will get to see in direction senses, right? Now further moving, next type of questions will be questions based on series, analogies, odd one out. अब इन तीनों टॉपिक्स में सिमिलर लॉजिक यूज होते हैं. सो अगर सीरीज की बात करूं तो सीरीज कैन बी नंबर सीरीज, alphabetical series, a combination series that may use different logics like
addition or subtraction, multiplication, division, or again a combination of that, right? So again, you will get to learn all these things with the sessions that you will get at PW, right? So this is another area. Now next thing is cubes and dices. Now this is a very important area, and invariably we have seen a question from this area almost in every examination. So it may be based on the cutting and coloring of cubes. So एक बड़ा cube दिया हुआ है, उसको हमने equal parts में divide कर दिया by applying some cuts, right? And then we removed some pieces, right? Now before cutting, we painted this cube and then we applied the cuts. And then you will have to find out कि कितने cubes हैं जिनका one face painted है, two faces painted है, and so on. Similarly, dice. आपने dice तो देखा होगा, 6 faces होते हैं, numbers लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6. Okay, so questions may be based on different positions of the dices. Now likewise, we have many topics and all these topics will be covered. Now we'll have to take care of all these topics in the months ahead, right? So arrangements and puzzles, this is one another area from which the questions may appear in the form of set. So बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे, बट अरेंजमेंट्स में जनरली क्या होता है, आपको कुछ डायरेक्शंस गिवन होती हैं एंड उन डायरेक्शंस के बेसिस पे आपको एक अरेंजमेंट फॉर्म करना होता है एंड देन 4 or 5 questions will be asked on that arrangement. Similar thing happens with puzzles. All right, now this is one part, one group in which I have divided these topics. Now I would say that these are logical reasoning, okay, topics from logical reasoning. Then last year, especially अगर मैं last year की बात करूं, so there were some questions on data interpretation as well as data sufficiency. Okay, अब data interpretation क्या होता है, थोड़ा सा mathematical होता है, calculative होता है. So कुछ data given होगा हमें, data in the form of numbers. Okay, now data can be given to us in the form of table, a bar graph, a pie chart, a line chart, histogram, spider chart. अब ये different अजीब से नेम मैंने ले दिए हैं, बट ये होते क्या है, right? So you will get to know once you will start preparation, and the students who have already started their preparation, they can relate to these terminologies that I am saying. Okay, so data interpretation is mathematical and calculative thing. Okay, now most of these questions will involve the concepts of percentages, ratios and averages. तो अगर क्वांट में हमारा परसेंटेजेस, रेशियोज एंड एवरेजेस स्ट्रांग है, देन हम इजीली टैकल कर पाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन को. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड टू डेटा सफिशिएंसी. डेटा सफिशिएंसी एक अलग ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन. सिर्फ फॉर्मेट डिफरेंट होता है, कंसेप्ट्स वही होते हैं जो हमने क्वांट में सीखे हैं, मैथ्स में सीखे हैं या फिर रीजनिंग में. ओके, सो फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट, right? So this is another part of logical reasoning. Now the third and the most crucial part is verbal based reasoning, and last year the questions were asked from these three different areas: syllogisms, statements and conclusions, and strong and weak arguments, right? अब ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये completely verbal ability पे based हैं, so that means आपको अपनी verbal ability, verbal skills पे भी इंग्लिश पे वर्क करना पड़ेगा टू टैकल दीज एरियाज, राइट? ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉपर स्टडी प्लान, हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव? हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास 5 मंथ्स हैं, बट हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें इन 5 मंथ्स के अंदर अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी टैकल करना है. एंड द ट्रूथ इज यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, राइट? अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये एक ट्रुथ है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ दीज एरियाज. I would say that you can start with these areas because most of the questions comes from here. ज्यादा से ज्यादा questions यहाँ से आते हैं and areas भी ज्यादा है. Okay, and spending 2 to 3 hours on every area. That means, let's say one day you are studying, you are taking out 4 hours. So in 4 hours you can complete 2 of these areas. Okay, so एक दिन में 2 areas, 2 topics को अगर tackle करोगे तो easily tackle हो जाएंगे. Okay, so 2 के groups बना लिए, so that means in less than 5 days you will be able to tackle these areas. Next,
Practice of these will require 2 to 3 days more. So if before your board examinations आप afford कर सकते हो just 1 week of studies and to take care of these like majority of these areas, then it will be good. And आपको क्या करना होगा, बोर्ड एग्जाम्स के बाद जस्ट एक छोटा सा राउंड ऑफ रिवीजन करना होगा and you will be done for these areas. Okay, then for the remaining 3 areas you can take out let's say hardly 4 to 5 days after your board examinations. अगर बोर्ड एग्जाम से पहले अफोर्ड कर सकते हो तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं होगी. ओके, सो बोर्ड एग्जाम से पहले अगर 3 to 4 days निकाल लेते हो एंड यू वर्क ऑन द बेसिक्स ऑफ दीज एरियाज, देन इट्स वंडरफुल, राइट. सो ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक स्टडीज स्टार्ट भी नहीं की है. नाउ व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड देयर स्टडी स्टार्ट कर दिया है एंड हमें इन सब टॉपिक्स के बेसिक्स पता है. वी हैव अटेंडेड द बेसिक लेक्चर्स. Okay, we have solved some limited amount of questions that were completed in the class. Okay, so अब आप लोगों को क्या करना है? So look at the complete study material that you have. Okay, so I'm talking about the study material. So हम क्या होते हैं कि we get overwhelmed, we get so much busy in our day-to-day life कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास study material क्या है. So PW provides you a lot of study material in the form of practice questions. Okay? अब ये सारे एग्जामिनेशन सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस्ड हैं. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी एंड स्पीड इंप्रूव होगी. ओके, सो दिस एग्जाम इज नथिंग बट द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड. जितनी ज्यादा स्पीड से क्वेश्चंस कवर अप करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के साथ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है. Okay, so we'll have to work for both these things. These two things should be coordinated with each other, speed and accuracy. Okay, अब इन दोनों चीजों को improve करने के लिए हमें सिर्फ practice की requirement है. So practice plays a very important role in the preparation of this examination, right? Practice ज्यादा है, so हमारे marks definitely increase हो जाएंगे. So what you have to do is, अगर आपको बेसिक्स पता है इन टॉपिक्स के बारे में, so don't be over confident कि हमें तो बेसिक्स पता है, हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम हर टाइप का क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाउ कैन आई से दिस? आई हैव एन एक्सपीरियंस गाइज. मेरे को 17+ years का एक्सपीरियंस हो चुका है. I am teaching even like before the inception of this examination. IPMAT examination 2011 में start हुआ था and मैं उस exam से पहले से पढ़ा रहा हूँ. Okay, so listen and understand and believe me, have faith on me that you need a lot of practice so that you will be able to tackle more number of questions with a better accuracy in the examination. Right? So what you should do is, अब ये वाले topics एक एक sequence में start करो and make sure that 15th of January से पहले, so 15th of January से पहले, right? I'll write the dates. So 15 January से पहले you must pick up all these topics one by one and practice 20 questions of each of these type. 20 questions enough है. 20 अगर इंक्रीज करोगे 20 की जगह 30 कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, बट मिनिमम 20 क्वेश्चंस फॉर ईच ऑफ दीज एरियाज करो, फिनिश करो एंड देन जस्ट लीव इट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. राइट, बोर्ड एग्जामिनेशंस मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट होंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जनवरी टिल मिड ऑफ मार्च, 15th March which is the tentative date. So मैं tentative यहाँ पे approximate dates दिख रहा हूँ. 15th March को हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. And then starting from 15th March, you have half of the March, entire April. Okay, entire April है. May में exam होगा. Okay, so you have more than 1.5 months for the revision of these topics. Okay, now during revision, what you have to do? So you will have to improve your testing skills. Right? So testing skills improve करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Mock papers. Okay, so during this period, after 15th March, give yourself 10 to 15 days for the revision of entire things, and then 10-15 दिन के बाद क्या करना है? Mock papers देना start करना है. So you can say that starting from 1st of April, you must write mock every 3rd day. So let's say 1st of April को एक mock दिया, then you have another 2 days to work on this mock, doing the analysis of this mock. ठीक है,
एनालिसिस के बिना एवरी मॉक इज इनकम्प्लीट। ओके, सो मॉक के साथ साथ एनालिसिस जरूर होना चाहिए। फर्स्ट मॉक दिया, एनालिसिस किया, जो भी आपके वीक एरियाज हैं उन पे वर्क किया, जो भी मिस्टेक्स हैं उन पे वर्क किया, then go for the next mock after, like at a gap of 3 days. So 1st April, 4th April, 7th April, 10th April, and so on. At a gap of 3 days you can plan the mocks, and after every mock do a proper analysis, so that you will keep improving, you will keep gaining from every mock. All right, so this should be your schedule for the month of April, right? Then in the month of May you will have the exams, right? Different examinations will be there, and you will be prepared to tackle all these examinations by that time. All right, and definitely you will see more videos from our side, more such strategy sessions, content sessions in the days to come. Okay, so friends, for this session, this is all from my side. I hope you would have gained something out of it. All the very best for your examinations and definitely the preparations. Have fun. Bye bye.